जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है जितने भी एयरफोर्स एस्पायरेंट्स हैं उनका मोशंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स में इंट्रोडक्शन को कितना मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, कितना इम्पैक्टफुल दिया जा सकता है कि एग्ज़ामिनर कि हमको सुने तो हमारा जो इम्पैक्ट है, जो इंट्रोडक्शन के लिए जो हमें टाइम दिया गया उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमने अपना जो इम्पैक्ट बनाया, हमने उसको कितना मीनिंगफुल बनाया, कितने कॉन्फिडेंस से हमने उसको रिप्रेजेंट किया ताकि एग्ज़ामिनर को लगे दिस इज़ द राइट पर्सन, आई एम चूजिंग इट। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा फील आना चाहिए, सामने वाला पर्सन को लगे कि हाँ दिस इज़ द मैन हु इज़ मेड फॉर द आर्मी, हु इज़ मेड फॉर द एयरफोर्स, हु इज़ मेड फॉर द इंडियन नेवी। सो किस तरीके से हमें बिठाया जाता है वहाँ पे? सबसे पहले हमें एक यू शेप के अंदर बिठा दिया जाता है और यू शेप के अंदर जो तुम्हारी पोजीशन होनी चाहिए, यू शुड बी क्वाइट काम, कंप्लीशेंट एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू लुक, लगे कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से यू आर वेरी वेरी डिसेंट पर्सन। तो आप उस जब ग्रुप में बैठे हों, जब उस डी शेप में बैठे हों तो आप बड़े बहुत पीसफुल तरीके से बैठे हों और आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो आपकी थाइज़ के ऊपर होने चाहिए कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उससे कॉन्फिडेंस शो हो, वो इम्पैक्ट क्रिएट करे सामने वाले एग्ज़ामिनर को। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों ने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि जीडी के अंदर तो समटाइम्स इट विल बी लाइक ए फ़िश मार्केट और उसके अंदर समटाइम्स आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है, बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं, बहुत सारे डाटा भी होते हैं, उनको आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो समटाइम्स ऐसा मार्केट बन जाता है कि उस समय सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग जाते हैं या सब लोग ये चाहते हैं कि मेरे को मौका मिले, मैं पहले बोल पाऊँ या मैं दूसरों को बीट कर पाऊँ। दिस इज़ द कंपटीशन, इन दैट यू हैव टू फाइट, in that you have to make your points, in that you have to make the impactful meaningful introduction। so introduction के लिए स्पेशली आपको जैसे 5 मिनट के लिए एक टॉपिक दिया जाता है, जो एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक होता है उसको पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसके ऊपर आप यू कैन मेक योर सम पॉइंट्स, सम लाइन्स ऑन दैट। और 1 मिनट के लिए आपको टाइम दिया जाता है जिसके अंदर अपना आप इंट्रोडक्शन फिनिश करें। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोगों को किस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है वो सिंक्रोनाइजेशन वे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपना नाम आना चाहिए, फिर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर क्वालिफिकेशन, देन यू विल से अबाउट योर फैमिली, हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली, what are the hobbies, what are the likings of yours, then you can say about your strength, then you can say about your weaknesses, and then the last thing you can say about the why do you want to join Indian Air Forces. Then after in the last you can say that now I am going to tell you about the topic which I have assigned to me. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करते हैं अपने नेम से। तो माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह। तो एक इम्पैक्ट आता है क्योंकि चीज़ों को तुम पोज दे के, मतलब पोज इतना नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि पोज बहुत रुक रुक के दे रहे हैं, बट इतना लगे कि हाँ ये इसकी आवाज़ में, इसके वे ऑफ टॉकिंग में, वे ऑफ एक्सप्रेशन में कि वो एक कॉन्फिडेंस झलक रहा है। तो एक पोज दे के जब हम चीज़ों को बोलते हैं तो इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। तो एग्जामिनर को लगे आई एम चूजिंग द राइट पर्सन, दैट पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट इज़ मेड फॉर द डिफेंस फोर्सेज या आर्म फोर्सेज, दैट इज़ मेड फॉर द इंडियन आर्मी, दैट ही इज़ मेड फॉर द इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। उनको लगे इम्पैक्टफुल होना चाहिए। सबसे पहले अपना नाम, माई नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह, दैट मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग द रीजनल टच, जैसे कि कुछ हरियाणा से बच्चे होते हैं, कुछ यूपी से होते हैं, कुछ बिहार से होते हैं, उनका एक रीजनल टच आता है। साउथ वालों का अलग टच आता है, साउथ लैंग्वेज, साउथ इंडियंस का अलग टच आता है, नॉर्थ इंडियंस का अलग टच आता है, नॉर्थ वालों का अलग टच आता है। तो इसी तरीके से सबका अपना अपना रीजनल टच होता है। तो उस रीजनल टच को आपको फिनिश करके जाना है ताकि उसमें लगे कि आप लोग तैयार करके आए हैं और एक बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स फेसिंग द मदर टंग ऑल्सो, कि हाँ उस टंग का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके जाएँ ताकि ये चीज़ों को आपके इंट्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए। तो आपने नाम से स्टार्ट किया, माई नेम इज़, माई सेल्फ, इफ़ यू आर यूजिंग माई सेल्फ Rudra Pratap Singh, so this is not a grammatically correct, so you must be grammatically correct in that. Second thing, if you are talking about your qualification,
what you are doing and what you have done. Initially you have to start what you have done. So, I did my 12th class in 2002 with 90% marks from this board, CBSE board, RBSE board, whatever you have, UP board, Haryana board या आंध्रा बोर्ड है वो, you can mention it. Now I am pursuing BSc, BA from Delhi University. Whatever you are doing, whatever you are having, your subject, your course, BSc, BCom, BA, whatever the course you are doing, you have to mention it. As far as my family concerned, there are 4 members in my family. We are 2 brothers. My father is a teacher. My father is in armed forces. My father is a doctor. My father is businessman. Whatever your father is doing, you can say it. And about your mother, my mother is a homemaker. My mother is a doctor. You can say it. My mother is in armed forces. If your mother is in armed forces, you can say that. I have one elder brother. He is a lieutenant in armed forces. If he is in, you are going to the talk about your hobbies, your strength. That your hobbies, your interest must be belongs to you, not belongs to the others. You don't copy with the others, क्योंकि if you are having that thing, you will be more confident. Whatever the hobbies you are having. I like reading books, I like dancing, I like music, I like traveling, I like adventurous things. Whatever that hobbies you are having, you have to mention it, क्योंकि it will impact on your introduction. These are the things which will make you more confident. If you are having, you like adventurous life like that, if you are want to join Indian Army, Indian Air Force या Indian Navy, that will provide you the adventurous life. So, if you are talking about your strength, my strength is I am confident, I am hard working, I have a good leadership quality. These are the things which you can say about your strength. And now I am talking about my weaknesses. My weakness is tendency to take too much responsibility. Sometimes you can say that the nervousness about the public speaking. I have a weakness about nervousness in public speaking, hesitation about delegating task, discomfort taking big risk. These are the things which you can. And if you are talking about why do you want to join Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army, some of the students can say that I am passionate enough, I have the passion to join Indian Army, to join Indian Air Force, to join Indian Navy. The first thing that you can say that I have applied before this exam, I have applied for the NDA exam also, I have done NCC also. That will impact on your passion. Why do you want to join Indian Air Force? Because continuously you are persevering, continuously you are doing, you are applying, you are trying for this exam. You want to join these forces, you are dedicated for these forces. So, you have to mention it. If you have a passion about this, I am passionate enough to join defense forces. Some of the students say that I want to take government job. These are the things. Some of the students have the family conditions is not good, and in a smaller age you get this opportunity to join Indian Army, Indian Air Force and Indian Navy. So, some of the students say that I love this uniform. I love this uniform. This uniform provides me more confidence. This uniform provides me the honor, respect in the society. These are the things you can say that. Some of the students say that I like adventurous life because defense forces provides you the adventurous things. Different places, they will provide you the everything whatever you are you want to do in the adventure, because you will be in the forest, you will be in the hill stations, you will be in the plain areas, you will be in the desert, you will be in the coldest area. Whatever the adventure you want to do, you will have everything in this. They will provide you the sports, ample facility for the sports if you are having the talent for this. So, these are the things which you can say in your introduction. Don't say that this is my childhood passion, this is my childhood dream, क्योंकि in the childhood you don't know about your passion, you don't know about your dreams.
You have seen some movies also, in that you can say that. So, some of the students say that I want to touch the sky with the glory. This is the motto of the Indian Air Forces. So, these things which will provide you the if you are providing these things in a better way, in a better confident, your introduction must be impactful on the examiners. If they listen to you, that must be meaningful, that must be more impactful, they think that this is the person, this is the right person, we are choosing it. Now I am going to like to tell you about the topic which is assigned to me, और उसके बारे में आप जो भी जो लाइन आपने एड ऑन की हैं या जो आपको समझ में आया उस टॉपिक के बारे में, देन यू कैन टेल अबाउट द टॉपिक. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टॉपिक विच इज़ असाइंड टू मी. तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये भी जो सारी बातें सुनी हैं उनको अपने इंट्रोडक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे, और आई होप कि आप एक बेटर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे ताकि यू विल गिव द बेस्ट ऑफ योर्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.